Hello, how are you? This is my first video on Harry Potter by written by J.K. Rowling. It is the sixth part, and the main sword is written Half-Blood Prince. This is the name, and I will read this first page to show you how it is and how I feel to read the only first page of it. As I read it, two chapters, but I will read only one because I am very lazy. So let's get started. The other ministers. It was nearing midnight, and the Prime Minister was sitting alone in his office, reading a long memo that was slipping through his brain without leaving the slightest trace of meaning behind. He was waiting for a call from the president of a far distant country, and between wondering when the wretched man would telephone and trying to suppress unpleasant memories of what had been a very long, tiring, and difficult weeks. There was not much space in his head for anything else. The more he attempted to focus on the print on the page before him, the more the clearly Prime Minister could see the closing face of one of his political opponents. The particular opponents had appeared the news that very day, not only to enumerate all the terrible things that had happened in the last week as to anyone needed reminding, but also to explain why each and every one of them was the government faults. As आगे ये एक पैराग्राफ बचा उसको ही पढ़ डालते हैं. He, the Prime Minister, pulse quickened at the very thought of these acquaintances, for they were neither fair nor true. How on earth was his government supposed to have stopped the bridge collapsing? It was outrageous for anybody to suggest that they were not spending enough what on bridges. The bridge was less than 10 years old, and the best bells were at a loss to explain why it had snapped cleanly in two, sending a. This will be done in the next video. I will read a whole chapter, this chapter 1. I will show you what the story is about and how it feels. Now, इस स्टोरी टेल्स दैट मतलब कि एक प्राइम मिनिस्टर था. वो एक बैठा हुआ था एक रूम में अपनी बड़े से मेमो को पढ़ रहा था, जो कि उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, उसके पल्ले नहीं पड़ रहे थे, बस इतनी बात है. और वो एक कॉल कर रहा था, वेट कर रहा था प्रेसिडेंट के कॉल से, जो कि फार डिस्टेंट कंट्री में रहते थे. लेकिन बीच में एक वेस्ट मैन वुड हैव टेलीफोन एंड ट्राइंग टू सप्रेस अनप्लेजेंट मेमोरीज ऑफ व्हाट हैड हैपेंड वेरी लॉन्ग. मतलब कि उसे पहले के मेमोरीज जो बता रहे थे क्या हुआ, और टायरिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वीक्स, कितने डिफ़िकल्ट वीक्स थे ये. दैट वॉज मच स्पेस इन हिज हेड फॉर एनी थिंग्स. उसके पास उसके दिमाग में उतना कुछ था ही नहीं कि वो और कुछ ले सके. बट फिर भी वो पूरी अटैम्प्ट कर रहा था कि फोकस करूँ उस पेज पे बिफोर हिम, एंड द क्लिनिक प्राइम मिनिस्टर कुड सी द ग्लोटिंग फेस ऑफ ऑन हिम. बट ऑफ द टेरिबल थिंग्स ने देखी, और जितने भी प्राइम मिनिस्टर के फॉल्ट्स थे जो क्योंकि उनसे पल्स शुरू कर दी, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पे ये हो गया था कि एक ब्रिज कोलैप्स कर गया कि जो बस 10 साल पहले बना है, और इतना बैक स्पर्स लगे, लेकिन वो क्यों स्नैप क्लियरली टू 2 सालों में ही कैसे. दैट वॉज द क्वेश्चन. और वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट वीडियो. सॉरी. हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत. It's a nice